Do I take it now that we will exemplify our conduct to a level that everyone will say, yes, upper house is a role model of decorum, discipline. It is a theater for dialogue, debate, deliberation, and discussion. Thank you. Come on. पश्चिमी चंपारण नरकटियागंज के अपराधियों के द्वारा नगर परिषद के सभापति प्रत्याशी राजेश श्रीवास्तव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अगले दिन एक होटल संचालक बेतिया के सूरज बैठा की हत्या जिले में हो गई। 7 दिसंबर को दिन दिहाड़े एसबीआई बैंक को लूट हो गई। भागलपुर में सरेआम महिलाओं को टांगी के से काट के कुल्हाड़ी से काट के मार दिया गया। आज जंगल राज पार्ट 2 पे बिहार चल पड़ा है। अतः आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मैं सत्याग्रह की धरती चंपारण से आता हूं और उस पवित्र धरती को बिहार की महागठबंधन की सरकार आज जो कलंकित करने की काम कर रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। बिहार की सरकार हमारी बातें सुनेगी नहीं और इस सदन में बात रखेंगे नहीं, आखिर कहां रखेंगे? मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसमें पहल करके इस समस्या का निदान किया जाए। धन्यवाद। Honorable members, one second, would you take your seat? Honorable members, I think all that I said has not been appreciated. If someone engages into an act of indiscretion or something that is not expected, that can happen. I'm here to look. I'm here to visit that person with exemplary consequences. I have gone to the extent of saying that I can be judgmental. You don't allow me. If the honorable member has said something, I will examine it completely. But if you are on your feet physically and do it, that is never done. Please. Jairam ji, you know it more than I do. Even when things come on record, there are consequences that emanate. Things can't be examined in the heat or passion. If a point is raised, if anyone has a grievance with respect to anyone making a reflection here, take recourse to rules. And even if you do not take recourse to rules, on my own I examine. I had the occasion to indicate day before, 2 of the honorable members came with identical special mentions. I am looking into it. My office is doing more work for it so that we bring about synergical approach. Dr. V. Sidasivam. Shivdasan. Yes, sir. Yes, sir. Yes. And I know, I don't believe in Shakespeare who says there is nothing in name. Everything is in name. Shivdasan. Yes. The pronunciation is the matter, sir. Go ahead. He is Dasan of Shiva. Respected chair of this august house, I am coming from Kannur, from Kerala state, where the largest number of libraries are functioning in India. The public libraries are the strongest public spaces in the world. Public libraries should be developed as a community center for the knowledge production, skill development, entertainment, and physical education. But in our nation, the number of libraries is very less, and the condition of existing libraries are not at all good. Respected sir, in various parts of the country, the local self-governments are giving some assistance to the public libraries. In rural India, the libraries are working because of this assistance of the local self-governments. But the union government, they are not
any financial assistance to the states, governments, or the local self-government for the public libraries and public cultural institutions in rural area. Earlier, local self-governments have had some income through the collection of tax, like entertainment tax. Even though it was a meager amount, it is taken by the union government through GST. Sir, then how the libraries will function, or how the libraries will survive? Respected Chair, look at the salary of the librarians in the public libraries in our country. Sir, they are getting very meager amount as in the name of honorarium. It is given by the state government. The union government is ready to allocate the proper amount for the salary of the librarians in public libraries in rural India. Respected Chair, the amount of salary of the librarians in local areas, public libraries, should be increased. Sir, the union government should provide sufficient amount for fund to the states for resources to the libraries. The basic facility should be ensured for the librarians. Some libraries in Kerala are functioning exceptionally well through the initiative of the common people, sir. But in many other parts of India, the situation is very different. So librarians can play a major role. The libraries can play a major role, emancipate the Indian people from illiteracy. Shri Neeraj Dangi. नो यूज यार। धन्यवाद सभापति महोदय, जो आपने मुझे ये महत्वपूर्ण मामला सदन में साझा करने की अनुमति प्रदान की है। और मैं समझता हूं कि ये मामला सदन के हर सदस्य का है और निश्चित रूप से हर सदस्य इस पीड़ा से वाकिफ भी है। भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत प्रत्येक सांसद को एक गांव जो है गोद लेकर के उसे मॉडल गांव की तरह विकसित किए जाने के लिए उसे गोद लेना था। लेकिन इस योजना में ग्राम पंचायत को विकसित करने के लिए अलग से किसी प्रकार के बजट का कोई प्रावधान नहीं है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जो है कॉमन रिव्यू मिशन CRM के तहत इस योजना का एक अध्ययन कराया गया और इस अध्ययन के तहत ये पाया गया था कि जो वर्तमान प्रारूप है इस योजना का, वो सक्षम नहीं है कि इस योजना के वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, और जो धन की कमी है उसके चलते ग्रामीण अवसंरचना जो है उस ग्राम को विकसित करने के लिए वो महत्वपूर्ण प्रभाव इस विकास के लिए नहीं डाल पा रही है। इस अध्ययन टीम में सेवानिवृत्त नौकरशाह, शिक्षाविद और विभिन्न अनुसंधान संगठनों के सदस्य शामिल हैं। ऐसी परिस्थितियों में योजना के मौजूदा प्रारूप को जो है किस प्रकार से देखा जाए, उसमें उन खामियों को किस तरह से पूरा किया जाए और पिछड़े इलाकों में आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराया जाए, ये जो है बहुत ही मुश्किल साबित हो रहा है। जब तक इस प्रारूप को बदला नहीं जाता है, सांसदों के लिए गोद लेना, मैं समझता हूं कि किसी गांव को गोद लेना संभव नहीं हो पा रहा है। सांसदों के MP फंड से संपूर्ण संसदीय क्षेत्र के साथ साथ एक गांव को मॉडल गांव में विकसित करना जो है इस योजना से संभव नहीं हो पा रहा है, वो सिर्फ एक परिकल्पना मात्र रह गया है। यही कारण है कि देश की 2,55,000 ग्राम पंचायतों में से अब तक 5 चरणों के तहत सांसदों द्वारा केवल अब तक 1855 ग्राम पंचायतों का ही चयन हो पाया है। यदि भारत सरकार सही मायने में बेहतरीन तरीके से ग्राम पंचायतों को विकसित करना चाहती है तो सबसे पहले एक आदर्श गांव जो है उसका एक मॉडल तैयार किया जाए और उसके तहत ही उस ग्राम में लगने वाले बजट का अलग से प्रावधान करें, ताकि प्रत्येक सांसद प्रति वर्ष एक ग्राम को गोद लेकर के उसे भली भांति विकसित कर सके। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि इस योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए इसे गंभीरता से ले और इसके लिए अलग से एक बजट का प्रावधान करें। डॉक्टर अमर पटनायक। Thank you, Chairman, sir. So I'll be very brief. Sir, yesterday, the issue of cyber attack at the All India Institute of Medical Sciences at Delhi was raised. So my
thought on this is that it should not be treated as an isolated incident of a cyber attack. So currently the figure states that 77% of Indian companies were hit by cyber threats during the festive season of 2021. That was the McAfee Enterprise and FireEye report. The National Cybercrime Reporting Portal saw a rise of 15.3% in reported complaints during the second quarter of 2022 compared to the first quarter. That's about 2,37,658 complaints. So it's a rising, issue of concern, and it is all the more important because we have been entering into various PPP models, not only in the hospitality, not only in the medical sector, but in railways, airways, and various public facilities and public utilities. So the point here is we have to look at this issue from 3 points. One, whether the current existing IT securities are adequate. Number two, whether they can be recovered. Actually, we should not stop at this. We have to also think about business continuity planning. How quickly, how fast the normal operation can be restored. It is not adequate just to recover the IT system. In the AIMS case, this is what is happening. There are long queues at OPD, at the billing counters, and the doctors also do not know what to do. So the most important thing here, therefore, is we publicly declare our business continuity plans in the event of attacks on our servers, along with mechanisms that establishes a timeline for resuming the normal operations. This is what happens in the United States. This is what happens in the UK. And I think we should take the advantage of the G20 to raise this issue for international collaboration on this particular aspect. So I re-emphasize that what is more important is to how quickly we recover the critical operations of the hospital. And that should be publicly declared. And then for a full-scale operation, whatever is the time taken. And this is not just for government to do, so this is for all private sector to do. So currently, we have the National Cyber Security Strategy 2020, which is really appreciable because government has brought it out. But the structure has not really come up. I would appeal, since the Honorable Minister is here, to make this structure very robust, and then it would actually become very useful for the economic activity in this country. Thank you so much. Shri V. Vijay Sai Reddy. Thank you, Chairman, sir. Sir, this year marks 75 years of India's independence, sir. While these 75 years of India's independence signify the immense progress in the country, the reality remains that independent India has failed to ensure a meaningful upliftment of backward classes in the country. Even today, the long-standing aspirations of the backward classes to have equitable opportunities in all spheres of life remains unfulfilled. Sir, every citizen of this country is grateful to Baba Saheb Ambedkar for granting reservations in proportion of their population, and it is the scheduled caste and scheduled tribes who are all very happy today because of the reservations. They are treated on par with the other communities in this country, and the upliftment could be possible. But unfortunately, the backward classes in the country have been unjustifiably left out from the fold of the caste enumeration and proportionate reservation. They have also been denied reservations in the central, state legislatures as well as higher judiciary, sir. Sir, even though the backward classes constitute more than 50% of the Indian population, the reservation is still capped at approximately about 27% or so. Sir, just last month, the Supreme Court has held that the total reservations, the ceiling of total reservation of 50% is flexible, and the breaching of the ceiling would not violate the basic structure of the Constitution. Therefore, there is no legal hurdle as far as reservations to the backward classes in proportion if their population is concerned for the government to provide reservations to the backward class in proportion of their population, sir. Sir, the decades of gross injustice suffered by the backward classes cannot be undone, but however, remedial measures can be undertaken, but we can ensure
a holistic upliftment of thorough proportional reservation. Sir, this is my sincere request to the government to take up the reservations for the backward classes in educational institutions, public employment, legislature, as well as higher judiciary. Thank you very much, sir. Shri H.D. Devgoda. Shri H.D. Sir. H.D. Devgoda. May I kindly sit and talk, sir? Yes, yes, please. Sir, regarding the drinking water in Karnataka is a major problem. I don't want to hurt the feelings of anybody in this house, but how Karnataka has been suffered for the drinking water, and we are fighting this battle. The things went on day to day. The water level is going down, and we have approached the union government, and we have also approached the Karnataka, the subsequent rulers. Sir, Mekedatu is one of the prime issue to construct the dam in our own area, not to encroach any area of the other states. Sir, We are the affected party. if anybody wants to speak, they can also speak. I can answer all those points which our other friends are going to speak. I will sit in this house and I know what is going on. Sir, one small area, Mekedatu, which is not encroached any other state's land. And in our own state, we want to construct a small dam and they are objecting. Sir, Karnataka is a deficient state, whether it is, there are so many issues pending in Government of India which we have demanded from Karnataka, whether it is Tungabhadra or Mahadai or Karnataka, Old Mysore. Sir, today we are begging for the drinking water in 9 districts of Old Mysore. Sir, let anybody question this. So I can make a request to our good self to see that the problem of Karnataka must be solved. That is my only request. I have come here to only see that the problem of Karnataka, whether it is Mahadai or whether it is the Now 0 hour is over. Question hour, question number 31. Question number 31. No, we'll accommodate. Honorable Minister. Shri Sasmit Patra. Sir, for this opportunity. Firstly, sir, I'd like to thank the Honorable Minister for the efforts made in terms of reducing the trade deficit between India and China in terms of the trade that's really happening. And as compared to 2013-14, as the Honorable Minister has mentioned, the trade deficit has come down in terms of the percentages, though absolute terms, it's still high. I would like to know from the Honorable Minister, sir, through you, what are the steps that the government is taking to reduce the trade deficit between India and China?
and how the PLI measures and the schemes would really help in terms of reducing this trade deficit, and what is the expected forecasted trade deficit in the next few years? Thank you. Honorable Minister. Honorable Chairman, sir, I think it's a very, very important question, but my esteemed colleague is possibly busy in other activities, so we don't have the privilege of having him here to ask me supplementary questions, but I'm grateful that Sasmit ji has highlighted this issue. I'd just like to take a minute, sir, to give a little perspective. India-China trade, if one goes back 22 years, around 2000, 2001, was barely $2 billion. Only $2 billion in 2000, 2001. And that position continued until 2002-03, where it increased at best to about $5 billion. At that time, the trade deficit consistently was under just about $1 billion. So if I look at 2000, 2001, $661 million. 1, 2, $1 billion. 2, 3 again reduced to $800 million. 3, 4, $1 billion. And this was the general trend in Indo-China trade. I don't know what happened after that. It's a matter for debate and research. But suddenly, after 2003-04, the $1 billion trade deficit over the next 10 years increased to $36 billion. And the entire country, in a way, became a large marketplace, inviting substandard, opaquely priced, non-transparent, valued goods into the country in a big measure, because of which our imports increased from 4 billion in 3-4 to 51 billion in 13-14. And in a manner of speaking, we opened ourselves to a large number of dependencies on China, which we have suffered for the years as the economy grew, as the country prospered. We became so dependent on them that products which at one point were India's strength, for example, Honorable Chairman, sir, active pharmaceutical products, APIs, active pharmaceutical ingredients, which India had tremendous strengths on. We used to export to the world. We had plants in India which manufactured high quality APIs. Sadly, we gave up that entire industry to China and landed up in a situation that when I was discussing the RCEP, at the RCEP negotiations, and I was attacking the Chinese side, that why are you allowing such substandard goods and why are you allowing low price? We don't even have many times any idea how you can make goods at lower than the raw material costs in India. He says, but sir, your industry is dependent on us. If I don't give you these 2 billion, 3 billion of APIs, your $10 billion pharma industry will collapse. And I actually realized that we have over 10, 12 years lost India's competitive strength in very critical areas. And therefore, sir, this government focused on the Make in India initiative. While of course with economic growth and prosperity, the demand for goods is increasing. And we do not have sufficient capacity as yet in India to meet this large demand for goods and services. A lot of capital good industry got killed in that 10-year period. And because of which today for a lot of capital goods, electronics goods, where we never promoted our industry, they all became dependent on Chinese imports. It is only the Modi government which recognized, the Modi government, sir, it's a very important subject. My honorable friend Jairamji appreciates the gravity of this subject, and I hope you are not holding a brief for somebody who's dumping goods into India. It's important that the country recognizes and realizes how we have become dependent on a country which has inimical interests, and how this government has, through a number of initiatives today, focused its attention on promoting Make in India. Sir, we have introduced production-linked incentive schemes where between semiconductors, where we are giving 76,000 crores, and 24 other sectors where we will be giving as Government of India 1.97 lakh crores as support to Indian industry
for the first time, such large measure of support at the central government level to promote domestic manufacturing, make our manufacturing competitive, and start reducing imports from China. And I'll just give one example, sir. Mobile phones. India used to import almost 100% of mobile phones, sir. We had only 2 plants doing mobile phones in this country. Thanks to the PLI scheme, today we have over 200 companies in the mobile phone ecosystem. And we are now not only producing for India, but we are a large exporter of mobile phones. Shri Premchand Gupta. श्रीमान जी, ये जो क्वेश्चन है, इसमें एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना इज नॉट द सॉल्यूशन. हमारा जो ट्रेड बैलेंस था सर चाइना के साथ 2004-5 में तकरीबन $1.5 बिलियन था, जो अब बढ़कर $115 बिलियन है, $115 बिलियन total trade, and the trade deficit is $73 billion, highest for since last 20 years. In any case, I am not blaming sir. Sir, at one point of time, China के लिए पूरी दुनिया से लोग बड़े-बड़े MNCs China जाते थे, plant लगाते थे, and China thus became manufacturing hub for the world. We are also dependent on Chinese products. So, sir, what we are doing, PLI scheme you have introduced, and in some cases it is successful also. But, sir, there are companies, because of COVID restrictions and other problems, political issues in China, many multinational companies, जो employ करते एक factory 2 लाख लोगों को, 2 lakh people are employed by one factory in China. Supplementary. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि सरकार इस बारे में कुछ ऐसा स्कीम बनाए कि ये कंपनियां अपना मैन्युफैक्चरिंग हब वहां से उठाना चाहती है, वहां से उठाकर हमारे यहाँ ले आए. Honorable Minister. अभी वो वियतनाम, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया वहां जा रहे हैं. तो why can't we bring them here? Honorable Minister. Honorable Chairman, sir. वैसे तो नजरअंदाज नहीं कर सकते इस वास्तविकता को कि जो आपने सही कहा 1.5 बिलियन का डेफिसिट अगर हमें विरासत में 2014-15 में 48 बिलियन का डेफिसिट मिलता है तो वो उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते. आप ब्लेम गेम की बात नहीं कर रहा हूं. एक देश की क्षमता को ही खत्म कर दोगे तो क्षमता को खड़ा करने में समय लगता है. Honorable Member. मुझे लगता है चोट जरा गहरी पहुंची है. उस समय आप भी सरकार में ही थे, पर अलग बात है ये. जहां तक कंपनियां जो चाइना से रिलोकेट करना चाह रही है, ये एक प्रोसेस होता है. ओवरनाइट कोई रिलोकेट नहीं करता है, ओवरनाइट कोई कंपनियां बंद नहीं करता है. अमेरिका ने भी कोई वहां से खरीदना ही बंद नहीं किया. हम एक एक प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट निजी क्षेत्र के साथ चर्चा करके हमने एक स्केल कमेटी बनाई, स्टीयरिंग कमेटी फॉर एडवांसमेंट ऑफ लोकलाइजेशन एंड प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट्स स्केल. ये पूरी निजी क्षेत्र के लोगों के साथ सलाह मशुरा करके आइडेंटिफाई किया गया क्या क्या कॉस्ट डिसएडवांटेज के एक एक बिंदु है और कितना सपोर्ट देने से भारत का उद्योग खड़ा हो सकता है. उस हिसाब से करते हुए ये PLI स्कीम्स डिजाइन किए, कोई विम्स एंड फैंसीज से नहीं बनाई. सिमिलरली चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के माध्यम से लोगों के लिए आउटरीच करना, देखना कौन अनाउंस कर रहा है नए प्लान्स. मेरे कलीग अश्विनी वैष्णव जी ने एक बहुत बढ़िया सेमीकंडक्टर को प्रमोट करने की पॉलिसी पहली बार इस देश में हुआ होगा कि 76,000 करोड़ सिर्फ एक सेक्टर के, क्योंकि हम चाहते हैं हम आत्मनिर्भर भारत को बल दें. इसी प्रकार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तरह तरह के हमने स्टेप्स ये. आप चाहो तो मैं तो 1 घंटे का उद्बोधन दे सकता हूं, पूरा क्वेश्चन आवर खत्म हो जाए. डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ लॉस, हर छोटे बड़े काम पे व्यापारी को, उद्योग को जेल में डालना या जेल में परेशान करना ना पड़े, उसको एक हिम्मत मिले कि हम व्यापार कर सके. बैंकों को मजबूत बनाना, किस हालत में हमें बैंक्स मिले थे 2014 में, सबके सब एवरग्रीनिंग और NPS के बोझ में दबे हुए थे. एक एक चीज को ठीक करते करते आज ये स्थिति बनी है कि देश भी मजबूत हुआ है और जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिसके आधार पर अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स देश ने तैयार किए.
इसमें हम सबका रोल रहा है। मैं समझता हूँ सभी राज्य सरकार, केंद्र सरकार सबने मिलके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब देश को एक मजबूत ताकत बनाया, विश्व शक्ति बनाई। Before I call upon John Britas, I would like to say it is age-old wisdom. Brevity is the soul of it. And it applies to everyone, including me. And I would urge everyone, the more homework we do, the brief we will be. And I'm sure, one second. The Honorable Minister has been very focused, so don't take it that way. The points are well taken from all sides. I would now call upon John Britas. Thank you, sir. Sir, you came to brevity only when it came to me. Sir, the Honorable Minister is very erudite, ebullient, and bit smart and clever too. Sir, in his answer, sir, in order to blame the UPA, he talked about the percentage of increase. That's from, say, 2,346% increase has happened. He is from the financial sector. Conveniently, he picked up the percentage here and he forgot the quantum. Sir, Prem Gupta ji talked about 73 billion US dollars trade deficit. Sir, that's not the true picture. This year, the trade deficit is going to be all-time high. It's going to touch 100 billion. Despite the so-called Atma Nirbhar and this incentive scheme. Sir, my question, specific question to you. This trade deficit cannot be dealt in isolation. It's part of the ecosystem. The GDP results have come for the first half year, and it says that there is a dip in the manufacturing sector. It means that we are on the wrong path. And there is a parliamentary standing committee report in front of him, which talks about the so-called deficiencies, which sir, my question. Sir, it has to respond. Sir, yes, sir, brevity. So the parliamentary standing committee talked about the deficiencies, administrative and regulatory hurdles, inadequate and costly credit facility. What is that he is going to do to improve the ecosystem and also to act on the specific suggestions of the standing committee? Honorable Minister. In a way, the honorable member has confirmed exactly what I said. The fact that India became so helpless and our manufacturing sector became so weak that having inherited a 48.4 billion trade deficit in the first year itself, we have in fact been able to really rein in the deficit and not allow the runaway increase that was allowed by the earlier government. Having said that, sir, the fact that the current year trade deficit is going to be high is a sign of growing economic activity also. The fact that our imports from China largely emanate from intermediate products on which we process and add value for further re-export or consumption in the country. The fact that we are importing a lot of machinery shows that the country now has started investing and gross capital formation in the country is increasing. The fact that we are increasingly consuming more goods will give confidence to new investors to invest in manufacturing, which Prem Gupta ji just mentioned, so that there's more manufacturing domestically. So this is a cycle. Investors keep watching. What is the demand? What is the consumption pattern? And when they see demand, when they see consumption, they import capital goods because unfortunately we've killed capital good industry in that 10-year period. We are now encouraging even manufacture of machinery. We are seeing a revival of domestic indigenous startups coming up with very, very good, bright ideas to promote Make in India. On the other thing about cost competitiveness, sir, the government has made a lot of effort on ease of doing business, decriminalizing laws, reducing the logistics costs. PM Gati Shakti is a unique initiative unparalleled in the world
by which we can do smarter and timely implementation of infrastructure projects Question number- and bring down logistics cost. Question number 32, Shri Abir Ranjan Biswas. Sir, question number 32. Honorable Minister. जी जवाब दे रहा हूँ टेबल पर बोला Supplementary one. Sir, as the reply given by the minister, it seems that for the nutrition of children, especially we know that milk is the chief source, he seems to be heavily dependent on the Poshan scheme as per the reply. So I would like to bring to the notice of the minister that this scheme has not been a very good success. Having a target of arresting stunted growth to 25% by 2022, the current NFHS 5 figures show that it has only achieved 35.5%. That's just an example, sir. So what my question is, does the Honorable Minister, since I'm again repeating, milk is the chief source of nutrition for under 6 aged children, does the minister, it has said that he does not regulate, the government does not regulate the milk prices. Does the minister intend to do something more to help out in these cases Honorable the people of Minister. the lower income group? Honorable Yes, Minister. the children of the lower income group, of course. Honorable Minister. Milk prices traditionally in the country have been deregulated, are determined by demand and supply. And also, we must bear in mind that half the country's population is associated with the agriculture sector, and income from dairy, income from the milk produced by them is a very important supplementary income that helps the farmers of this country, that helps our annadatas to provide a better future for their children. Having said that, sir, the government is very conscious of its responsibility towards the nutrition of the children, and therefore we are implementing the Poshan Abhiyan under the Ministry of Child and Women Welfare, which provides support for children under 6 years of age. Supplementary two. Second supplementary. Sir, I'm going for the second supplementary, but as I said, the Poshan Abhiyan has not been a good success. So I was asking if government intends to do something more. Okay. Anyway, Honorable no, sir, this is the second part. This is the first part. Okay. Have only one part. Sir. So the second part, sir. Now, as per the answer and as per several news articles, the milk inflation increased to 7.7% in October 2022. I would like to know whether the minister has requested or intends to request the finance ministry to remove the 5% GST on curds, lassi, buttermilk, and 12% GST on condensed milk, butter, ghee, cheese, etc. for easy accessibility for the lower income groups. Thank you, sir. Well, the question doesn't relate to me directly. It's a matter of the finance ministry, along with the finance ministers of all the states. GST Council is not of the central government. It's a council of all states which collectively takes decisions in their collective wisdom. I would like to share with the honorable member that a lot of this emanated from the demand from industry itself to have a small GST component, because a lot of the inputs that were going in for packaging, for transporting, and the entire distribution chain for milk products had GST being paid on them, and they were losing the input credit. So really the consumer prices have not gone up at all because of GST. They have been able to take the benefit of input GST credit and netting it off against the GST imposed. So I think that it'll be good if the honorable members study the impact of GST in the context of input credit also. Santosh Kumar. As per the annexer attached to this answer, it is evident that in most of the states, these prices have shoot up. So I would like to ask the minister, is there any corresponding increase in the income of farmers, Honorable Minister. producers? Honorable Minister. Chairman, sir, since I've given 3 years data, you will find that the increase over 3 years is not very significant. By and large, prices have been stable. It's only recently, because of global situation and the fact that the demand is increasing significantly, that prices have gone up in a small measure. We are still monitoring the situation to ensure that it's orderly. We are fortunate to have the cooperation
Department and Cooperation Ministry now as a separate ministry, which is supporting the cooperative sector in processing, helping farmers get the major chunk of income coming out of sale of milk, and supporting the farmers in a big way. So Amul, for example, from Gujarat has been a big success story, which has helped farmers, particularly women farmers, Yes, get income out of the sale of milks. So the fact that the milk prices have gone up slightly is actually supplementing the government's effort to support an increase in income and doubling the income of farmers. Ghanshyam Tiwari. मैं माननीय मंत्री महोदय को इस बात के लिए तो धन्यवाद दूंगा। Question supplementary. हाँ सर, यस सर, पूछ रहा हूँ कि भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है, पर मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि भारत में प्रतिदिन कितना दूध उत्पन्न होता है और कितना दूध बिकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा मिलावट उसमें होती है और किसानों को इसी से नुकसान है। Honorable Minister. वास्तव में बधाई के पात्र तो पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं, हमारे एनिमल हस्बेंड्री अफेयर्स मिनिस्टर, और दूध बड़े पैमाने पे भारत में बनता है और वास्तव में विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश बनने का गर्व तो मुझे लगता है पूरे सदन के हर सदस्य को होना चाहिए। इस बात का गर्व, मिलावट कोई जानबूझ के नहीं करता है। मिलावट के बारे में जानकारी जैसे ही कंज्यूमर अफेयर्स में या कोई डिपार्टमेंट में आती है तो मेरा पूरा विश्वास है कि वहां का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसका कार्रवाई करता होगा। अवश्य उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी से हमारी व्यवस्थाएं काम करती होंगी, लेकिन अगर माननीय सांसद महोदय को कोई विशेष जानकारी है कि कहाँ मिलावट हो रही है, कौन कर रहा है, तो हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। रही बात दूध के उत्पादन की, आज दुनिया में हम सबसे बड़े 23% दूध का उत्पादन करते हैं और 1984 लाख टन यानी लगभग 2000 लाख टन दूध का उत्पादन 2021 में हुआ, जिसका शुल्क वैल्यू 8,32,000 करोड़ रुपए और अधिकांश ये पैसा सीधा किसानों के। ओके। राघव चड्डा। सर दूध के दाम जब बढ़ते हैं तो किसान का बजट और देश के आम परिवारों का घर का बजट भी बिगड़ जाता है। राघव चड्डा जी, मैं किसान पुत्र हूँ। आप तो हैं ही सर, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। सर दूध के दाम बढ़ने का एक मुख्य कारण, सर मैं एक मिनट बस, मैं मंत्री जी का ध्यान भी चाहूंगा सर दूध के दाम बढ़ने का एक मुख्य कारण यह रहा कि फॉडर प्राइसेस इस देश में पिछले 2-3 साल में खास करके बहुत बढ़े हैं। अभी गुजरात का जिक्र हुआ, गुजरात इस देश के दूध के उत्पादन में सबसे आगे है, बिल्कुल सबसे आगे है, लेकिन उस गुजरात में भी पिछले 2 साल में फॉडर प्राइसेस का जो एरिया अंडर क्रॉप था वो 1,36,000 हेक्टेयर से गिर गया। मेरा सवाल यह है कि भारत सरकार को इस बात का अंदाजा था कि फॉडर प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने आज से 2 साल पहले एफपीओ नाम का एक प्रपोजल, मेरा सवाल यह सर 100 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन 100 एफपीओ सेटअप करने के लिए भारत सरकार ने एक प्रपोजल मूव किया था आज से 2 साल पहले। 2 साल में एक भी एफपीओ रजिस्टर नहीं हुआ, जो सिर्फ फॉडर प्राइसेस और फॉडर प्रोडक्शन पे ध्यान जिसको देना था, जिसका मुख्य ऑब्जेक्टिव ये था। मैं एफपीओ के बारे में पूछना चाहूंगा। तो अच्छी बात कही माननीय सदस्य ने, अगर झूठे अफवाहें और नारेबाजी के बदले वो खुद थोड़े एफपीओ ही बना देते तो देश का बड़ा भला होता। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार लगातार फॉडर के ऊपर भी नियंत्रण रखती है। पीछे जब फॉडर की कमी महसूस हुई तो उस पे इंपोर्ट अलाउ कर दिया गया, उस पे इंपोर्ट ड्यूटी कम करने की जरूरत पड़ी तो उस पे भी सरकार ने विचार किया। एक सरकार लगातार नियंत्रण रखती है कैसे कीमतों को कंट्रोल में रखा जाए। क्वेश्चन नंबर 33, श्रीमती शांता छेत्री। Sir, my
question number 33. Honorable Minister. हाँ जी सब मैंने बोला Supplementary one. Sir, my first supplementary question is under Prime Minister Textile Region and Apparel, will the Honorable Minister through you, sir, answer specifically the fund allotted and project detail for Darjeeling and Kalimpong district? Thank you, sir. Honorable Minister. सर सबसे पहले तो आज मुझे मौका मिला है कि अपर हाउस में आपके अध्यक्ष होने के बाद में ये पहली बार है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि यही खंड है जहां हम नए मंत्री चाहते थे हमारा अच्छे से इंट्रोडक्शन हो जाए लेकिन हुआ नहीं था। और आज जो सवाल यहाँ से आया है कि टेक्सटाइल रिलेटेड उन्होंने जो 2 सवाल किए हैं उनका जवाब दिया है लेकिन वो क्लैरिटी नहीं है कि वो पश्चिम बंगाल के लिए क्या चाहती है और कौन से विषय में चाहती है। तो मैं संरक्षण आपका इसलिए चाहती हूँ कि टेक्सटाइल मंत्रालय ने क्या किया है और उनका कंसेप्ट क्या है क्योंकि उनके दूसरे प्रश्न में पूरे प्रश्न में भी पूछा गया है कि जो पीएम मित्रा पार्क बनने वाला है इसमें क्या हमारा स्टेटस है। तो टेक्सटाइल रिलेटेड जितनी भी योजना अब तक भारत में बनी इसमें 2 प्रकार की चीजें हुई कि सिर्फ कॉटन बेस्ड इंडस्ट्री के बजाय हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, रेशम, जूट और इसके साथ में मैनमेड फाइबर के लिए हम सबने योजना बनाई। और जब मैनमेड फाइबर के लिए जो योजना बनाई जिसके लिए प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन से हम लोगों ने ये पीएम मित्र स्कीम का इंट्रोडक्शन हुआ तो एक पैमाने पे इकोसिस्टम से एक ही साथ में ये प्रोडक्शन मैनमेड फाइबर का हो जाए इसके लिए हम लोगों ने ये स्कीम तैयार की। और इसमें 13 राज्यों से प्रपोजल आए और 13 में से 7 राज्यों को इसमें पीएम मित्रा पार्क के लिए इसमें सम्मति दी जाएगी। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये पार्क के लिए भी पश्चिम बंगाल से कोई प्रपोजल नहीं आया। दूसरी बात कि जो हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और क्राफ्ट के लिए जो पैसे अब तक दिए गए हैं इसमें कई सारी स्कीम है जिन माननीय जो सदस्य का प्रश्न है ज्यादातर रेशम के लिए है, सिल्क के लिए है कि 4 प्रकार के सिल्क जो प्रोडक्शन होती है तो यहाँ प्रोडक्शन से लेके जहाँ उनकी कोकुन के साथ में उनकी खेती भी हो जाए फिर उसका ड्रिलिंग हो जाए इससे अच्छे उसके सेंटर बने, उनको लेटेस्ट मशीनरी मिले और इसके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट से प्रपोजल होनी चाहिए जो आज तक आई नहीं है। और सबसे अच्छी बात कि हमारे यहाँ सभी हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के आर्टिजन जिसका हमें बहुत महत्व होने वाला है G20 समिट में भी आप भी कहीं जाते हैं तो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट की चीजें लेके जाते हैं लेकिन आर्टिजन कार्ड ही नहीं बने हैं। वहाँ कितने लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जो केंद्र सरकार की योजना में मांगे गए हैं वो उन्होंने नहीं बताया। Second supplementary. Sir, my second supplementary question is whether the Textile Ministry on its inspection found Darjeeling or Kalimpong district suitable for setting up of a Prime Minister Mitra Park. If yes, can the proposal still be sent by the state government? And if yes, the last date of submission of the proposal. Thank you. Honorable Minister. वही बताया कि यहाँ से प्रपोजल आई नहीं है। प्रपोजल आएगी तो वो स्टेट में डेट भी चली गई। 51 ये जो 51% शेयर राज्य सरकार का होता है सेटअप करने के लिए और बाकी केंद्र सरकार के सहयोग से ये पार्क लगेंगे और इसमें टेक्सटाइल पॉलिसी, लेबर पॉलिसी इसका सब भी ध्यान रखा जाएगा लेकिन वहां से प्रपोजल ही नहीं आई है। थैंक यू। श्री अनिल बोंडे। आदरणीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि 13 राज्यों से जो प्रस्ताव पीएम मित्रा के लिए भेजे गए उसमें महाराष्ट्र की तरफ से संभाजीनगर, औरंगाबाद तथा अमरावती, नांदगांव पेट के 2 प्रस्ताव गए हैं। तो ये पीएम मित्र की जो योजना है ये कब से कार्यान्वित होगी और उसका कार्य प्रभाव और रोजगार निर्मिति, किसानों को फायदा महाराष्ट्र में ये 2 प्रस्तावों के बाद में कैसा होगा उसके बारे में जानकारी दी। महाराष्ट्र से 2 प्रपोजल आई है, एक ग्रीनफील्ड के लिए, एक ब्राउनफील्ड के लिए और इसके लिए राज्य सरकार से समन्वय करके जो राज्य सरकार लेबर पॉलिसी, टेक्सटाइल पॉलिसी इसके साथ में और इकोसिस्टम से 1000 एकड़ जगह जहां पे हमारी इंस्पेक्शन चल रही है और जो एजेंसी के माध्यम से ये इको पार्क डेवलप होगा जिसमें सभी प्रकार की सुविधा साथ में, क्योंकि ये वैल्यू चेन वाला प्रोडक्शन है तो सब लोग एक साथ में अच्छे से बिजनेस कर पाए तो ये करके हम लोग उनको मंजूरी देंगे। श्री के
RN Rajesh Kumar. Honorable Chairman, sir, Virudhunagar in Tamil Nadu is identified for setting of a PM Mitra Park. Officials from the Ministry of Textiles have already visited the place. Will the Honorable Minister be pleased to state the current status of the PM Mitra Park Textile Park at Virudhunagar project? Thank you, sir. Honorable Minister. मैंने बताया कि सभी 13 स्टेट से 12 स्टेट से 13 एप्लीकेशंस आई है और इसके लिए राज्य सरकार से हम लोगों ने कुछ बातें करी है कि जिसमें टेक्सटाइल पॉलिसी होनी चाहिए, लेबर पॉलिसी होनी चाहिए, पावर पॉलिसी होनी चाहिए, जो अच्छे से वो सपोर्ट करेंगे उसी को ये पार्क मिलेगा। श्री इलामारम क्रीम। अलार्म क्या है? इलामारम क्रीम। You can use the other, you can now use both. Yes. Honorable Minister has explained various schemes for capacity building in textile sector. My specific question is, what's your plan to revive National Textile Corporation mills which are laying closed? Question number 34. Shri Josh K. Money. बहुत बढ़िया नहीं है, मतलब दर्शना में Honorable Minister. A statement is laid on the table of the House. Supplementary one. Yeah, right. Sir, Kerala has gone through 2 consecutive floods in 2018 and 19. We not only lost the lives of hundreds of people, but also their lives and their livestock and agriculture. During 2018 disastrous floods, the center has allotted 89,540 metric tons of rice to distribute through PDS as flood relief. It is learned that the center has demanded to pay 205 crores for the food grains supplied during the emergency. Pointed question. Sir, my question is how this demand can be justified by the sender as the food grains were distributed among poor people and casualties during the worst natural disaster of our Kerala. Okay, Honorable Minister. This subject does not relate to our ministry because every state is given support by the center for any such natural disasters that may occur. Funds are given by the center to all the states of India, and they are expected to meet such requirements of any natural disaster out of those funds. Odisha has had so many cyclones, Gujarat has had cyclones and typhoons, Maharashtra has had them, Andhra Pradesh has had them, West Bengal has had them. Every state, through their SDRF and NDRF, meets the requirements of such a nature. I think Kerala should not be an exception, and they have received the funds from the center. Kindly utilize those funds to give relief to your people. Second supplementary. Actually, it is during the emergency time. Anyway, the second supplementary is in 2022, India has been ranked 107 in the global hunger index out of the 121. The neighboring countries like Nepal, Pakistan, Sri Lanka, all in front of us, and Afghanistan only countries behind us. So, though the government has continuously questioned the methodology used to bring these index, the prevalence of hunger and poverty in the country is well seen. My question is, has the government found out the reason behind this mismatch between the excess stock of food grains and the prevalence of hunger in the country? Does the government have any plans to address the critical issue which affects the millions of poor people? Honorable Minister. Proposition he has made that food grains were supplied to Kerala and therefore it should not be charged is wrong. NDRF, SDRF is required to pay for the food grains or any other supplies that you may take from anybody else. The food grains are given to Kerala on the premise that they will pay for it. Now they are changing their mind. It's an abject failure of the state government to meet the needs of their people, which has been exposed by my colleague, Mr. Mani. As regards the hunger index, first of all, the name itself is a misnomer. The fact is that every state of India, sir, Honorable Chairman, sir, every single state of India has given it to us in writing that thanks to the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana,
where we supplemented 5 kilos of additional grain over and above National Food Security Act entitlement. We have in a way eliminated hunger or starvation from this country. Every state has written that not a single death due to starvation occurred over the last 2 years. We have it in writing, including from your state of Kerala. Yes, sir. This hunger index is a private index made by some private NGO based on subjects which are not related to hunger. Okay. So they have to first decide what the nomenclature should be. The statistics are drawn out of data which is unverified, and also on measures or measurements which don't relate to India. For example, the wasting, stunting figures that take up are just completely not related to Indian features of an Indian person. So I think it's important that we recognize what is official and validated and what is mere propaganda. Honorable Minister, I'm slightly making a point. In our country, iconic status is granted on parameters that are often baffling. And we have calibration by agencies that do not have any rationale. This august house is repository of the wisdom of 1.3 over billion people. We therefore, when we raise an issue in this house, that there is a calibration by an agency that should not carry much conviction unless the honorable member or the honorable minister is premised on our own record. Let us believe in our own worth. It will be very difficult and inappropriate for us to surrender our assessment, our achievements to be assessed by those who have either inadequate data or are dictating their actions by their interests, not ours. Shri Sanjay Singh, Shri Sanjay Singh. Shri Sanjay Singh. Shri Sanjay Singh. Shri Sanjay Singh. Shri Sanjay. I think I would, one thing before, I think every time I say something and drop off a hat, we get adversarial stance. Try to digest what I have said, sir. We must analyze the calibration. We will have respect for, one second, please take your seat, Dr. Jairam Ramesh, take your seat. What I have said is rational with a rationale, and that rationale is we should not be captive. We are a part of global unity. One second, sir. Sir, don't interrupt the chairman at least. Please, I understood it. So I would, one second. I would urge everyone that there are some issues which we need to reflect overnight. I would have individual interaction with all of you. I am very categorical. Our country cannot be allowed to be hurt by calibration from outside on premise which we do not believe in. That does not mean the calibration outside has no credibility. We will have to get into those areas. I'll come to the question now, Shri Sanjay Singh. Confined to the question. धन्यवाद मान्यवर। सबसे पहले तो मैं आपको हृदय से बधाई देना चाहता हूं। पहली बार आपके समक्ष बोलने का अवसर मुझे मिला है और आपने इस विषय पे मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, भारत की राशन वितरण प्रणाली मजबूत होनी चाहिए, ये हम सारे लोग इस बात पे सहमत होंगे, लेकिन इसके साथ साथ हमारी राजनीतिक मत भिन्नता हो सकती है मान्यवर, लेकिन राशन वितरण प्रणाली में राशन के दुकानदार कितनी गड़बड़ी करते हैं, इस सदन का हर नेता इस बात को जानता है। मैं इसी पे आ रहा हूं सर। पूछिए। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने घर घर राशन पहुंचाने की योजना अरविंद केजरीवाल जी ने बनाई,
जिससे कि राशन वितरण देखिए हंस रहे गरीब आदमी को, क्वेश्चन पूछिए, गरीब पे हंसते हैं ऐसे सर। क्वेश्चन पूछिए, ये सब जानते हैं कि राशन वितरण प्रणाली में धांधली होती है। क्वेश्चन पूछिए। मान्यवर, घर घर राशन पहुंचाने की योजना को आप मंजूरी क्यों नहीं देना चाहते? इसको आज सदन में स्पष्ट कीजिए। गुड क्वेश्चन। योगा को आप मंजूरी नहीं देते, राशन पे आप मंजूरी नहीं देते, आप चाहते क्या है? गरीब को राशन क्यों नहीं देना चाहते? महोदय, मैं भी माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी बड़ी विनम्रता से बताना चाहूंगा कि देश में मुझे कानून बड़ी खुशी व्यवस्था है कि आप दोनों विनम्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी विनम्रता से आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि देश में एक कानून है, कानून व्यवस्था से देश चलता है और कानून ने प्रावधान ऐसे बनाए जिससे कोई भी राज्य सरकार अगर धांधलेबाजी करना चाहे तो उसको रोका जा सके, और यही दिल्ली की स्कीम कोर्ट द्वारा नामंजूर करी गई है। सरकार, एक मिनट सर, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से, क्योंकि इनको गलत फहमियां ठीक करने की आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया है कि फ्री फेयर प्राइस शॉप भी राज्य सरकार के अंतर्गत चलती है। एक्शन क्यों नहीं लेते अगर वो गलत काम कर रहे हैं? राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसमें एक्शन ले। और ये घर घर के नाम पे चोरी करना चाहते हैं। दिल्ली की सरकार हर चीज में चोरी करके धांधलेबाजी से गरीब का अनाज चोरी करने का एक नया प्रयोग, पहले दारू में चोरी, अब अनाज में चोरी, ये चोरी के सरकार चोरी को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहती है। मंत्री जी बैठिए, सुभाष चंद्र। I have a point of order. I have a point of order, sir. This is in relation to Rule 47, Sub-Rule 2. Rule 47, Sub-Rule 2 says, the right to ask a question is governed by the following conditions. And there are 22 conditions. For the person who will raise the question, for the honorable member who will raise the question, that there is no such conditionality insofar the ministers are concerned while giving the reply. Just now, I have found this House has witnessed that in reply to a supplementary question of Honorable Member Mr. Sanjay Singh, the Honorable Minister characterized the state government as a chore, thief government. Whether this is admissible under the rules, I put it for your kind consideration. There are two things I need to indicate. One, there is no point of order during this tenure, this period. Am I right? Yeah, but you have allowed. Question hour. So you have allowed. One. With your consent, I have raised the point of order. There is no question of point of order in question hour. Number two, the honorable member has raised an issue which we all must consider. I'll look into it. Yes. I'm so. Thank you, sir. Sir, my Subhash Chandra Pilli, please. Yes. Not mine. Thank you, sir. I was appreciating your patience, but the patience continued beyond a limit. Go ahead. I am putting my straight question, sir. Can the Honorable Minister state the reasons why the targeted public distribution system in Andhra Pradesh covers only 61% of rural and 41% of urban population, when compared to the stipulated coverage of 75% rural and 50% of urban population under National Food Security Act? I also request the Honorable Minister
to revise the coverage of beneficiaries by TDPS and NFSA as recommended by Niti Aayog. Honorable Minister. This is unfortunately a legacy of the very ill-drafted AP Reorganization Act, in which a lot of questions were left unanswered. It was done in a hurry, because of which, when the allocation of free food grain between Telangana and Andhra Pradesh was decided, it was probably not very scientific, and Andhra Pradesh feels that they have been unjustly deprived of the right amount of coverage. Telangana was given a greater share compared to Andhra Pradesh. It was done before this government came in. It was based on the census of 2011. And ideally, when the census of 2021 happened, you would have been able to look into the matter afresh. Unfortunately, due to the COVID pandemic, we have not yet been able to conduct the census. I'm sure, and I have assured the Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh during several conversations, that when the census data, current census data comes out, we will know exactly which state should get what quantity. I received it as a legacy. Was probably done in a hurry, but sadly it's beyond my power under the NFSA to change it. Thank you, sir. Shri, Based on 2000 census. If only you can conduct the census, Shri this problem will Jawahar not have Sarkar. arisen. You are repeatedly post. Shri Jawahar Sarkar. Sir, for this opportunity. I have only one simple and sharp question addressed to the Honorable Minister. Are we heading for a food crisis? I have figures with me. We have stocks, usually stocks of about 25 million to 26 million tons of wheat at the beginning of the year. We have around 29 to 30 million tons of rice at the end of the year. And last year's procurement was an all-time record, last year's procurement. But in this current year and in the previous year, we have consumed a lot thanks to the Prime Minister's Yojana scheme, the free food scheme. The next question is that both wheat has been impacted, sir. As you know, wheat has been impacted by the heat wave and other factors. And, sir, rice, paddy has also been badly impacted. Honorable they have Minister, been the question has been asked. reflected on the procurement figures. Honorable So we Minister. are in a shortage state. We are in a shortage state, Honorable Minister, Honorable and I Minister, would like government question is to very clear. admit it and take steps. Honorable Chairman, sir, that question is in two parts. I'll give a sharp and short reply for the first part. Sir, give short, polite, and Very modest. polite, sir. Sharp may be avoided. Have you seen me ever lose my temper in any of the question answers, No, sir? I know Jawahar Sarkar ji, he will not take a sharp reply. He will take a modest reply. Okay, so I'll, with all due modesty, sir, Yes. share with the honorable members through you, sir, that the country, thanks to the very deft management of the economy by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, will not face any food shortage in the years to come. Yes. I can assure the honorable member, we are carefully calibrating and managing our stocks of buffer stocks of rice, wheat, of different other products where we have buffer stocks on pulses. We are very deftly managing and calibrating import duties, export duties to ensure that our stocks remain intact. And while the world may face a food deficit, fortunately, because we are monitoring it on a daily basis, with the Honorable Home Minister, Mr. Amit Shah, heading a group of ministers continuously monitoring inflation and stock levels and other associated fiscal and monetary measures, we have been able to control scarcity as well as control inflation. As regards this other point on buffer stocks, our buffer stocks are within norms despite, as I said earlier, doubling the food allocation. Nearly 1,100 lakh metric ton of rice and wheat has been distributed free of charge to 80 crore people. It's a humongous quantity. Thanks to the record procurement, we were able to feed every single person. And as I said earlier,
zero starvation deaths. Yes, And I'm sure you'll appreciate that Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, particularly in the stress of COVID, was one of the most important schemes that saved the country. Honorable Vice President and Chairman, sir, you yourself have received accolades in your international visits about this scheme, sir. Question number 35, Shri Ajit Kumar Bhuyan. Question number 45. Honorable Minister. Statement is laid on the table, sir. Supplementary one. From Honorable Minister's reply, I came to know that there was an inquiry or investigation on the aspect of irregularities in the construction work. But now I would like to know that if there is no construction defects, then how the part of the Lamjung-Silchar portion of track, which is the only connectivity of Barak Valley of Assam and to the states of Tripura, Manipur and Mizoram, is washed away during the rainy seasons everywhere, leading to untold misery to the people of these areas. Honorable Minister. And another point, and the same question, that Northeast Frontier Railway... Let the Honorable Minister respond. No, sir, this is the same question, sir. Part of the same question. There is One more another- supplement. You Yes. get one more supplement, Honorable Minister. सर, पहले मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके डीप विजडम और लॉ की जो बहुत वास्ट नॉलेज है और पब्लिक सर्विस में आपका जो लंबा अनुभव है उससे इस हाउस को बहुत फायदा होगा सर, बहुत बेनिफिट होगा और नए हाइट पे पहुंचेगा यहाँ पे डिबेट सर। मैं क्वेश्चन के आंसर पे आता हूँ। लमडिंग सिल्चर गेज कन्वर्जन का जो काम हुआ था सर 1996 में सैंक्शन हुआ था, 2010 से 2015 के बीच में इस पे काम हुआ था। माननीय सांसद महोदय ने जो प्रश्न पूछा है कि क्या इसके ऊपर कोई इंक्वायरी हुई थी और इंक्वायरी में अगर कुछ नहीं मिला तो वॉश आउट क्यों हुआ, ये आपका प्रश्न है। इसमें इंक्वायरी हुई थी सर, सीवीसी के एक पूरा पैनल बनाया गया था, उस पैनल ने जाके इंक्वायरी की थी, इंक्वायरी में कुछ भी नहीं मिला था और इसके अलावा भी अगर कोई पॉइंट अगर आ जाता किसी के जानकारी में हो तो हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है। जो मई में बहुत जबरदस्त एक साथ क्लाउड बर्स्ट जैसी बारिश हुई उसके कारण नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी जगह रेलवे लाइन, हाईवे, प्राइवेट हाउसेस, फार्म लैंड्स सबको डैमेज हुआ था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जानने की सर कि मई में डैमेज हुआ विद इन अ पीरियड ऑफ some 38 to 40 days, entire network was restored in a record time with very good efforts by the entire team, including the state government and the central government together. Second supplementary. I would like to know that is there any lapses? Are there any lapses in planning or execution? And at the same time, whether any inquiry has been conducted to ascertain the cause of massive damage in the section in the recent flood, and how much amount had to expended to put the railway traffic. Honorable Minister. मई के महीने में जो बारिश आई थी, it was almost like a cloud burst. और केवल इस सेक्शन की बात नहीं है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में विशेषकर जो आसाम और मणिपुर के कुछ एरियाज हैं उसमें बहुत वास्ट डैमेज हुआ था, बहुत बड़े फ्लड्स थे। इसके लिए जो राज्य सरकारों ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलके जो काम किया उसको सबसे पहले अभिनंदनीय है सर। वो काम इतनी बड़ी मैसिव फ्लड में भी एक बहुत ही मेथोडिकल तरीके से, एक बहुत ही अच्छे तरीके से, एक प्रॉम्प्ट रिस्पांस से काम हुआ है। रिस्टोरेशन वर्क पे फोकस किया गया। और जो माननीय सांसद पूछ रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम आई, सर कोई भी नई रेलवे लाइन जब भी बनती है उसको स्टेबलाइज होने में करीब 10 से 12 साल लगते हैं सर। मनोज कुमार झा। शुक्रिया माननीय सभापति महोदय। माननीय मंत्री जी हैं तो एक तरह से मैं ये कहूं कि ये न थी हमारी किस्मत की विशाले यार, तो आज विशाले यार भी हुआ। मैं चूंकि प्रश्न इससे संबंधित नहीं है फिर भी मैं चाहता हूं कि रेलवे का मामला है, मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूं, हजारों की संख्या में
जिनके रिक्रूटमेंट की सारी प्रोसेस हो गई थी टेक्नीशियंस की, उनमें से अभी भी स्टैंड बाय और वेटिंग क्लियर होना बाकी है, क्योंकि रेलवे हमारे लिए सिर्फ व्यावसायिक उद्यम नहीं है, रेलवे के पीछे सामाजिक सरोकार है। इस पर ध्यान दें माननीय मंत्री महोदय। टोटली अनरिलेटेड क्वेश्चन है, फिर भी मैं मान्य सांसद जी की जानकारी के लिए कहना चाहूंगा, आज रेलवे करीब 1.5 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से रिक्रूटमेंट का प्रोसेस कर रही है। आज आप जानिए एनटीपीसी कैटेगरीज हो, ग्रुप बी की कैटेगरी हो, कितना ट्रांसपेरेंटली कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हो रहा है। कहीं पर भी पूरी तरह से चौकन्ने हम लोग की बाय चांस कोई दलाल बीच में आके प्रॉब्लम भी करना चाहे, उनके ऊपर भी एक्शन लिया जा रहा है। और जो पुराने वेट लिस्टेड कैंडिडेट्स थे, उसमें करीब 70% कैंडिडेट्स को ऑलरेडी दिया जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 36, सुशील कुमार गुप्ता। ऑनरेबल मिनिस्टर। सभा पटल पर रख दिया गया। सप्लीमेंट्री 1। फर्स्ट सप्लीमेंट्री सर, माननीय मंत्री जी ने जैसा अपने आंसर के अंदर बताया, 2022 में सप्लीमेंट्री चावल के भाव जनवरी से लेकर नवंबर तक 4 रुपए किलो बढ़ गए। 60% हिंदुस्तान चावल खाता है। पानी की कमी के कारण कुछ राज्यों में चावल की जगह दूसरी खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मेरा सवाल है, क्या केंद्र सरकार किसानों को अधिक चावल उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और कैसे करेगी, और पानी वाले राज्यों के अंदर विशेषकर? माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत करवाना चाहूंगा कि चावल की खेती निश्चित रूप से देश के अंदर जो हो रही है, उसमें लगभग 31 करोड़ टन है जो पूरा उत्पादन होता है, उसमें से 13 करोड़ टन है वो चावल का उत्पादन होता है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि भाव की बात है, तो निश्चित रूप से समय समय पर भाव का उतार चढ़ाव होता है और ज्यादा वेरिएशन भी नहीं हुआ है। पहले जितना देखा जाए तो बहुत कम उतार चढ़ाव हुआ है, और इसको लेकर सरकार निश्चित रूप से हमेशा सरकार भाव कंट्रोल करने का भी ध्यान रखती है और साथ ही कंज्यूमर का भी ध्यान रखती है और किसान को भी सही दाम मिले, दोनों चीजों को ध्यान में रखकर सरकार काम करती है। और इसको बढ़ावा देने के लिए और सरकार के जो प्रयास किए जा रहे हैं, मैंने सेकंड सप्लीमेंट्री रिटेल बाजार में 6 रुपए किलो बढ़ गया, आप कह रहे भी कम बढ़ा और बढ़ेगा। आम व्यक्ति का क्या हालात हो रही है देश के अंदर, ये जानने की बात है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, किसान भी इस परेशानी से जूझ रहा है। किसान की आय बढ़ाने के लिए, विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए, अच्छे चावल की निर्यात की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कृषि अनुसंधान केंद्रों पे इस 5 वर्ष में कितने अनुसंधान किए गए चावल की उन्नत किस्म को बढ़ाने के लिए? ऑनरेबल मिनिस्टर। बताते हुए खुशी है कि आईसीआर के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और कई वैरायटियां हैं जो चावल की इजाद की गई है, और एक्सपोर्ट की दृष्टि से भी कई नई वैरायटियां इजाद की है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पूसा बासमती के तौर पर भी नई वैरायटी आई है। इसके अंदर जैसा कि एक हमारी जो वैरायटी है जिसमें RI 64 है और एक RI स्वर्णा भी है, और इस तरह से टोटल वैरायटियां हैं वो 8 नई वैरायटियां अभी पिछले 1-2 साल के अंदर नई वैरायटी आई है, जिससे कि वो विदेश के अंदर जाती है। तो कुल मिला के कुछ यूरोपियन कंट्री के अंदर एक विषय आया था जिसमें हमारे जो किसान पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं, ट्राइक्लोजोल जो उपयोग करते हैं, उसकी वजह से उन्होंने ऑब्जेक्शन किया। लेकिन अब उसी की ध्यान में रखते हुए ये जो नई वेराइटियां तैयार की है जिसके अंदर जिंक है, प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, तो ऐसी वेराइटियां तैयार की है जिसकी वजह से आज उत्पाद जो एक्सपोर्ट है उसमें भी लगातार वृद्धि हो रही है। और मैं बताना चाहूंगा कि पिछले साल की बनिस्बत इस साल जस्ट जो 2021-22 में जो एक्सपोर्ट चावल हुआ था वह 1.7 करोड़ टन था, जो इस साल बढ़कर 2.12 करोड़ टन हो गया है। House stands adjourned till 2:30 p.m.
नुकसान का केंद्रीय टीम से सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाया जाए, जिससे अति पिछड़े जनपदों के किसानों, गरीब मजदूरों को बाढ़ से इस आपदा से राहत मिल सके। धन्यवाद। सर, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि सर आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर प्रदान किया। माननीय महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार का और आपका एक अत्यंत ही गंभीर विषय के संदर्भ में ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। सर, आजकल पूरे बिहार में, पटना सहित जो राजधानी है उसके सहित पूरे बिहार में बड़े पैमाने पर युवा शक्ति जो है सर, नौजवान जो हैं, सूखे नशे के आदी हो गए, जिसके वजह से पूरे बिहार में नौजवानों का जो एक बड़ा तबका है वो बर्बाद हो रहा है सर। वहाँ सूखा नशा में सर गांजा, ड्रग्स, नशीली इंजेक्शन, सॉल्यूशन, व्हाइटनर इत्यादि पूरे गिरफ्त में आ गई है सर। वहां पर बिहार सरकार ने नशाबंदी लागू कर रखा है सर, मगर उनके गलत नीतियों की वजह से नशाबंदी पूरे तौर पर बिहार में लागू नहीं है जी। और उसके अलावे नशाबंदी तो है और बड़े पैमाने पर शराब और नशा की चीज आ रही है सर जी। आर्थिक लॉस तो हो ही रहा है, बस सबसे चिंता का विषय है कि नशाबंदी आपने क्या सफलता हासिल नहीं कर पाए, जमीन पर नहीं उतार पाए, और युवा जो है पूरी शक्ति चेंज हो गई है। घर का घर बर्बाद हो रहा है, नौजवान की जिंदगी जा रही है सर, परिवार का परिवार बर्बाद हो रहा है, अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, माँ और बहन की। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप was an important scholarship scheme for research scholars from Muslim, Christian, Sikh, Jain, Buddhist and Parsi communities. Yesterday I was answered in Lok Sabha by the Ministry of Minority Affairs with a statement that government has decided to stop Maulana Azad National Fellowship. It is really shocking and it will affect many aspiring research scholars from various minority communities. Honorable Ministry says that the Maulana Azad National Fellowship is overlapping with other scholarship. If there is such overlapping issues, the government shall systematically solve that issue. Cancelling the entire scheme is not a wise idea. If there is no Maulana Azad Fellowship, the students from minority sections who are not coming under other reservation criteria like OBC, SC and ST will be pushed away from all fellowship schemes. The decision to discontinue a fellowship named after Maulana Azad, who is India's first education minister, is an insult of his legacy. I kindly request Honorable Minister of Minority Affairs to withdraw the decision to stop Maulana Azad National Fellowship immediately. दोपहर 2:05 तक के लिए स्थगित की जाती है।
आजादी के बाद देश की पहली लोकसभा के स्पीकर जीवी मावलंकर थे। मराठी परिवार से संबंध रखने वाले जीवी मावलंकर का अधिकांश जीवन अहमदाबाद में गुजरा। दादा साहेब के नाम से मशहूर मावलंकर ने भारतीय संसदीय लोकतंत्र में ऐसे मानदंड स्थापित किए जिनकी मिसाल आज दुनिया देती है। मावलंकर को लोकसभा के जनक की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। पहली लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पर जीवी मावलंकर ने न सिर्फ संसद भवन में नियम और प्रक्रियाओं को पेश किया, बल्कि कई संशोधन भी वो लेकर के आए थे। सदन में प्रश्नकाल को नियमित जीवी मावलंकर ने किया, जिसके बाद जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही और बढ़ गई। काफी कड़ाई के साथ वो संसद भवन में मान मर्यादा का पालन करते थे और सांसदों से भी करवाते थे। सांसदों को शपथ दिलवाने की शुरुआत जीवी मावलंकर ने की थी। एक बार उनको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आपका नाम लेने में मुझसे कुछ गलती हो जाती है तो आप मुझे माफ कर देना। गुजरात में उन्होंने कई स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, जिस दौरान 6 साल उन्हें जेल में भी रहना पड़ा था। लोकसभा के पहले अध्यक्ष के अलावा उनकी पहचान एक महान स्वतंत्रता सेनानी के तौर पर भी है। उनके योगदान को देश कभी भी नहीं भूल सकता। स्वतंत्रता आंदोलन की नायिका मातंगिनी हाजरा, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि देश के लिए मर मिटने की कोई उम्र नहीं होती। वर्ष 1932 में अपनी झोपड़ी के बाहर से निकलने वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन के जुलूस का शंखनाद से स्वागत करने वाली मातंगिनी 62 वर्ष की उम्र में आजादी के आंदोलन से जुड़ी। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तामलुक में इसकी कमान मातंगिनी हाजरा ने संभाली। मातंगिनी ने तामलुक में एक बड़ी रैली निकालने का निश्चय किया और 29 सितंबर को 6000 लोगों के जुलूस के साथ मातंगिनी हाजरा तामलुक थाने की ओर चल पड़ी। ब्रिटिश प्रशासन ने पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी, लेकिन मातंगिनी हाथ में तिरंगा लिए वंदे मातरम के उद्घोष के साथ बढ़ने लगी। अचानक एक गोली मातंगिनी के दाएं हाथ पर आ लगी। घायल मातंगिनी दूसरे हाथ में तिरंगा लिए फिर आगे बढ़ने लगी। गोलियां चलनी बंद नहीं हुई और लगातार तीसरी गोली 72 वर्ष की मातंगिनी हाजरा के माथे पर जा लगी। आखिरी सांस तक हाथ में तिरंगा और जुबान पर वंदे मातरम। यही थी मातंगिनी हाजरा। अद्भुत साहस, उत्साह और आजादी पाने की ललक से युवाओं को भी पीछे छोड़ने वाली मातंगिनी हाजरा पूरे देश के लिए एक मिसाल है। ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನವನಾದ ನಾನು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಚುನಾಯಿತನಾದವನಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ, ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು, ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. श्री तेजस्वी सूर्य. ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರು. Second youngest MP in the 17th Lok Sabha, elected at the age of 28. From effectively raising issues of regional and national importance in Parliament to firmly advocating India's data sovereignty by being member of the Parliamentary Standing Committee on Information Technology. The country has witnessed an economic miracle
in the last 7 years. Tejasvi Surya has utilized every opportunity, focusing on legislative, deliberative, and developmental roles. Economic reforms introduced in the last 4 budgets that she has presented is very dedicatedly, concertedly a result of the conviction of the government to introduce economic reforms. He has raised voice in the matters of national and public importance in 24 debates of parliament, ranging from safe evacuation of Indian citizens from Afghanistan and safety of NRIs and PIOs on national issues like CAA, terrorism, cybercrimes, and environmental preservation. Under the leadership of the great Prime Minister Narendra Modi, has radically transformed the country's electorate, the country's polity, in such a manner that our country's democracy is only becoming strengthened every single day. He has raised 267 questions on the floor of the House. Apart from his participation in debates, Tejasvi Surya has also made several zero-hour interventions on local language in IBPS exam for regional rural banks, security of monuments of national importance, law and order situation in Kerala, and implementation of NRC in Karnataka. For the posts of officer scale 1 and office assistant multi-purpose for regional rural banks, it was mandatory that the candidates who apply for the examination must profess proficiency in the local language. Surya also moved a private member's bill before Parliament seeking to repeal the Information Technology Intermediary Guidelines Rules 2011 as it dissuades big tech companies to censor free speech without constitutional oversight. He has raised a wide gamut of issues related to his constituency, like shortage of nurses and nursing colleges in Karnataka, efficiency of airports in Karnataka, suburban rail project in Bengaluru, proposal for national highways in Karnataka, minimum wages for gig workers, Swadesh Darshan project for Karnataka, herbal gardens in Bengaluru, NHAI projects in Karnataka, and also ease in registration of startups. Namaskar, hello and a very warm welcome viewers. You're watching the special presentation of Sunset TV, your MP. And today we are in Bangalore South constituency, which is the parliamentary constituency of BJP's Tejasvi Surya. In this edition, we'll see how his vision of development has translated into action on ground. So come along. As an elected representative from Bengaluru, he envisions the city to be one of the biggest economic powerhouses in the country with the help of a young team. So Tejasvi ji, I remember I had covered 2019 Lok Sabha elections in Karnataka, South Bengaluru. I remember that fanfare when there was this greenhorn taking over Congress's long-term veteran. You won. Of course, this is a high-profile seat for the BJP. 2019 to 2022. How have you transformed your constituency? Well, it has been a great learning experience for me. Before I say how I have transformed the constituency, I would want to spend 30 seconds saying how there has been a transformation personally for me. I have grown more patient, more mature. I feel more responsible for the people of my constituency who have reposed so much faith in me. I have grown to trust the possibility of the system to deliver more. I see that the poorest of the poor, the weakest of the weak, approach the system with a lot of hope and faith that their lives can be actually positively transformed. And I have also personally learned that there is no point in being a cynic. It's always better to be an optimist. And I think the last 3 years has made me a bigger optimist. That the system, the levers of power, the corridors of power, all of these can actually be used to bring in tremendous transformation in the lives of the weakest and the poorest. This has been my personal learning and journey in the last 3 years. Several issues or projects for the development of the residents of Bengaluru and the state of Karnataka in general were taken up
by the Member of Parliament Tejasvi Surya with the central government and the state government of Karnataka. These include requests to increase railway expenditure in Bengaluru, approvals for suburban railway project, request to reduce GST for hotels. Tejasvi, I know that this is a very urban constituency and the issues are also very different. So going ahead, these urban challenges, of course, you talked about infrastructure, you talked about mobility, but other challenges, how do you plan to address them? Because this year the rains were devastating for Bengaluru, for Karnataka. So those infrastructural issues, what are your plans ahead? See, one must realize that the challenges that Bangalore is facing today in terms of its public infrastructure being in shambles is not a creation of today or yesterday. It's a legacy problem that is almost 15 years old. And if I can lay the blame for the problems of Bengaluru today at anyone's doorstep, it would squarely and fairly be on the political class and the administrative class the last 15 years who are at the helm of affairs. We cannot allow this rot to continue. From the first day in office, I have been campaigning for an exclusive legislation for Bangalore. Okay. Bengaluru needs ownership, political ownership. And in that regard, all the parastatals, that is the BDA, the BBMP, the BMTC, BWSSB, all of them need to be brought under one head so that there is a coordination between the parastatals. So the last 3 years, I have spoken, written, I have agitated in the intra-party forums with the Chief Minister and all others. And thanks to all those efforts, the BJP government in Karnataka has introduced a new BBMP legislation and under which the new elections will now take place. Solutions go beyond provision of providing basic needs and instead focus on enhancing quality of life and livelihood of the individual. There are 75 Jan Aushadhi Kendra in Bengaluru South, and Tejasvi Surya has been working assiduously for providing medicines to the needy at affordable rates. Around 80 lakh to 1 crore citizens in the city avail medicines from Jan Aushadhi Kendras. Bengaluru South Parliamentary Constituency will soon have 100 Jan Aushadhi Kendras where citizens can avail medicines at almost 70% reduced cost. Whether it is insurance, whether it is Awas Yojana, whether it is medicines at an affordable rate, whether it is COVID relief, whether it is the Namo Vidyanidhi scholarship that we have started in our constituency to give scholarships to the meritorious children coming from economically weaker sections, that we do it as an office initiative where we give scholarship of more than 10,000 rupees for about 10,000 children in the constituency. All of these are initiatives aimed at transforming lives, empowering the poor, and also displaying to them every day that the systems, the governments actually work for their benefit. Resolving complicated problems and addressing grave civic issues, Tejasvi Surya has tackled all the situations with aplomb. COVID-19 threw unprecedented challenges before the young lawmaker. He ensured a bed-blocking system with reforms and a new public dashboard within 100 hours, offering real-time data on hospital-wise bed availability. He launched an oxygen concentrator bank of over 112 units for assisting the treatment of COVID-19 and post-COVID-19 patients of Bengaluru. It held more than 600 COVID patients and was the biggest oxygen concentrator bank set up by any MP in the country. These oxygen banks have been very helpful for the patients. My grandmother suffers from COPD. A month ago, she fell down in the bathroom, and unfortunately, due to unknown reasons, her oxygen saturation levels came down to 78%. So we consulted our family physician, and he asked us to give her oxygen support with the help of oxygen concentrator immediately. I immediately contacted our Honorable MP, Tejasvi Surya sir's office. They asked me to get a copy of prescription and Aadhaar card. So when I came down here, I met Mr. Aniket. He was very helpful, and he showed me the demo of the product. And he also told me that he would be giving oxygen concentrator of higher capacity if necessary.
Tejasvi Surya set up a team of volunteers to attend to citizens' emergency requirements during the COVID-19 lockdown period. The MP COVID Task Force provided delivery of groceries, medicines, and free cab rides to hospitals. He also revamped 4 defunct hospitals during COVID using the MP lads and the CSR funds. During the time of COVID, our Honorable MP Tejasvi Surya sir, from his MP lad fund, created this to save the lives of the children. This is of very useful to the public, especially the poor people. And this is one of the best ICOs in itself. When the RBI imposed regulatory restrictions on the Sri Guru Raghavendra Cooperative Bank on January 10, 2020, Tejasvi Surya sprang into action. 400 crore were directly transferred to agreed depositors' accounts through the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. For the first time in India's history, depositors of failed cooperatives got their deposit insurance in the shortest possible duration. Tejasvi Surya also initiated the Bengaluru South Education and Social Transformation Project to transform the lives of Class 10 students and to improve the standing of Bengaluru South in education. Under the project, the lawmaker runs a year-long program to ensure zero failures and dropouts of school children in his constituency. The scholarship scheme is available for the students like us. Thank you for Tejasvi Surya sir for helping us. We came to know that there was a scholarship scheme in the given by the government. Without wasting much time, we just came and applied for the scheme, and we submitted all the required documents they asked for, and we got a check. The Bengaluru South legislature has also designed Sansad Dhwani, a platform where citizens discuss government schemes and policies with their elected representatives. Through Sansad Dhwani, he has publicized the National Education Policy, Budget 2020, abrogation of Article 370, and the Citizenship Amendment Act. Powerful, prosperous, confident, audacious, young India. Thank you so much. Youth Can Lead is also a pilot project of Tejasvi Surya, initiated in 2021 to build civic responsibility and nurture leaders among young citizens. I am a participant of the first cohort of Youth Can Lead. Youth Can Lead is an amazing initiative to help the youth get involved in the process of governance, as the power of young minds can tremendously help change the country. So during our fellowship of the Youth Can Lead program, we have got an insight into different aspects of policy making, law making, governance, social work, and reform. The harvests of the Bangalore rose onions were drastically impacted during export ban on all varieties of onions. Grown mainly for exporting to Southeast Asian countries, about 60,000 tons of variety was at risk of going waste. Tejasvi Surya's commitment to ensure the protection of farmers' interests helped the Bangalore rose onions get an exemption from the exports ban. Surya has undivided focus on startups, as he believes in being a job giver and not being a job seeker. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जब आप काम करते हो स्लो होता है, मगर सर का उतना नहीं है, बहुत जल्दी काम करते हैं, जो भी डिसीजन है इमीडिएटली बता देते हैं, बहुत एनकरेजिंग है, बहुत सपोर्टिव है. हमारे तरह बहुत स्टार्टअप को और द इकोसिस्टम के लिए बहुत सर हेल्प करते हैं. Sports is one of the most impactful sectors that can inspire youth and bring glory to the country. Tejasvi Surya has organized a football tournament to engage all youngsters of Bengaluru and provide a platform for young talent in the constituency to showcase their skills in a semi-professional event. Would be like an Olympian challenge, a 16-day challenge was unveiled, where participants took up tasks to enhance their physical and mental fitness.
To inspire the youth, Tejasvi Surya cycled from Vidhan Sauda to Kolar in a 75-kilometer Cycle to Freedom ride, commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav. For many physically challenged persons, an inaccessible public office typically means that several services of the government are not effectively delivered. In an attempt to make public places more wheelchair-friendly, Tejasvi Surya collaborated with NGOs to install 15 temporary metallic ramps in the constituency. In a recent collaboration with MP Tejasvi Surya, we have made certain places of public usage physically accessible for person with disabilities. अभी हमने उनके साथ एक प्रोजेक्ट किया है जिसमें हमने पुलिस स्टेशन, स्कूल्स, पब्लिक पार्क्स, ATMs, लाइब्रेरीज, इन सबको हमने एक्सेसिबल बनाया है. Between 2015 to 18, Tejasvi Surya represented the country's youth delegations in Russia, United Kingdom and Israel, where his oratory skills and in-depth knowledge of Indian culture drew the admiration of foreign delegates. During the Vande Bharat mission, from the time flights became operational in May, there were over 100 requests via phone and email from stranded citizens abroad. Tejasvi Surya assisted in the repatriation of about 1,090 stranded Indians from 24 countries, including the United States, United Kingdom, Greece, Mexico, Philippines, and Hong Kong. He also undertook measures to assist in the repatriation of Indian students in Ukraine. Bengaluru is not only India's economic growth engine, but primarily it is the most important growth engine for the whole of the South. This is the startup capital of the country. This is also the innovation capital of the country. The vision that I have for Bangalore is very simple. Just like how Tel Aviv can be the innovation capital for the Middle East, Bangalore can be the scientific, innovative, technological capital for the world. To achieve that, Bangalore needs infrastructure that is state of the art, that is truly global, and that can actually attract the best of the talent from around the world. Well, viewers, that's all we have for you in this edition. Thanks for watching. With camera persons Jitendra Negi, Ajendra Kumar, and camera assistant Pradeep Kumar, I'm Kriti Mishra, signing off from Bangalore. नमस्कार, सनसेट टीवी में आपका स्वागत है। हाजिर हूं मैं हर्ष रंजन लेकर प्रोग्राम अर्थनीति। अर्थनीति बिजनेस और इकोनॉमी से जुड़ा वो कार्यक्रम है जिसमें हम बेहद सरल तरीके से समझने समझाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया और भारत के आर्थिक मंच पर क्या चल रहा है। हम समझेंगे कौन सी नीतियां बन रही हैं, क्या है इन नीतियों के नफे और नुकसान, और कैसे हम योजनाओं का ले सकते हैं अधिक से अधिक लाभ, और ये सब कुछ हम समझेंगे बिल्कुल आपकी भाषा में। बिजनेस और इकोनॉमी के जार्गन्स रहेंगे हमसे कोसों दूर, और आज का विषय आप पीछे देख पा रहे हैं। बढ़ेगी EMI और घटेगी महंगाई।
तो हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर ये क्या फॉर्मूला है जिससे कि आपकी ईएमआई घट जाएगी लेकिन ओवरऑल इन्फ्लेशन यानी महंगाई कम हो जाएगी। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो इसकी बारीकियों को समझने और समझाने के विशेषज्ञ हैं। स्वागत है आपका डॉक्टर चरण सिंह। आप एग्रो फाउंडेशन के सीईओ हैं, आरबीआई में रह चुके हैं, आईएमएफ के साथ आपका लंबा साथ रहा है। बहुत बहुत स्वागत। और आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं शुभमय भट्टाचार्य जी। आप बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार के सलाहकार संपादक हैं। फाइनेंस में पिछले 2.5-3 दशकों से आप लगे हुए हैं और ये कीड़ा फाइनेंस और इकोनॉमी का आप में इतना था कि आपने सिविल सर्विसेज छोड़ा और अपना करियर पूरी तरीके से फाइनेंस जर्नलिज्म में परसू किया है। तो शुभमय, पहला सवाल हम आपसे पूछें, इसके पहले ग्राफिक्स देख लेते हैं। दरअसल 2 दिनों तक आरबीआई मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक चली और उस बैठक के क्या नतीजे आए हैं वो हम एक ग्राफिक्स के जरिए देखने की कोशिश करेंगे। रेपो रेट में 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है और अब जो रेपो रेट है वो 6.25% हो चुका है। रिजर्व बैंक इस साल 2.25% तक रेपो रेट बढ़ा चुका है। महंगाई को काबू करने के लिए रिजर्व बैंक ब्याज दरें बढ़ाता है और साल 2023 के लिए विकास दर का लक्ष्य अब 7 से घटाकर 6.8% किया गया है और भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 561.2 अरब डॉलर का हुआ है और अप्रैल से अक्टूबर तक जो सीधा विदेशी निवेश था इसके भी आंकड़े अच्छे हैं, बेहतर हैं, 22.7 अरब डॉलर का रहा है। तो सबसे बड़ी बात जो आरबीआई कमेटी की रही है वो शुभमय है कि 35 बेसिस पॉइंट बढ़ा, 5 बार बढ़ चुका है ये रेपो रेट, लेकिन महंगाई जो है अभी भी जो दायरा है 6% तक का उससे ऊपर है। इस पर आपकी त्वरित प्रतिक्रिया। हर्ष, वजह बढ़ाने का वजह यही है। मुद्रास्फीति क्यों होता है? मुद्रास्फीति तब होता है जब बहुत ज्यादा पैसा बहुत कम चीजों के पीछे करता है, उनको खरीदने की कोशिश करते हैं। इतना ज्यादा पैसा बाजार में है, इतने कम चीजें हैं, लोग खरीदने जाएंगे तो मुद्रास्फीति हो गई। उस पैसे का जो स्टॉक है उसी चीज को आरबीआई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, उसको बाजार से निकलने का कोशिश कर रहा है। और आरबीआई को करने का वो कोशिश का जरिया क्या है? ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। अगर ब्याज दर बढ़ाएंगे तो निश्चित ही क्या होगा कि बैंक ज्यादा दाम पे लोगों को पैसा देंगे, एनबीएफसी ज्यादा दाम पे लोगों को उधार देंगे, तो निश्चित ही लोग कम उधार लेंगे। कम उधार लेंगे तो उनके पास कम पैसे रहेंगे जिससे वो चीजों को के पीछे भागे। तो अपने आप ही मार्केट में एक तरह का कंट्रैक्शन आता है और ये जब कंट्रैक्शन आता है ये मुद्रास्फीति के विपरीत में काम करता है, तो मुद्रास्फीति कम हो जाता है। और आरबीआई का यही प्रक्रिया है और यही प्रोसेस में, और इसीलिए महंगाई घटाने का यही सबसे मतलब मॉनेटरी पॉलिसी के लिए यही स्टेबल लाइन ऑफ आर्गुमेंट रहता है। और पूरी दुनिया के जो सेंट्रल बैंक्स हैं यही काम कर रहे हैं और भारत को भी ये करना पड़ रहा है। एक और ग्राफिक्स के जरिए हम जरा देखते हैं कि ये लगातार जो 5 दफा आरबीआई ने रेट्स बढ़ाए हैं इसका क्या असर रहा है। अक्टूबर महीने की बात करें 6.77% महंगाई की दर रही है। सितंबर में आप देखिए 7.41% थी, यानी कि अक्टूबर महीने में बढ़ाने का रेपो रेट फायदा हुआ। अगस्त में भी ये 7% थी, जुलाई में 6.71% थी और जून के महीने में भी 7 से ऊपर थी, 7.01%। इसे हम देख पा रहे हैं। डॉक्टर सिंह, लगभग 2.25% पिछले मई से हम बढ़ा चुके हैं। 3 बार तो लगातार बैठक में, एक बार एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैठक हुई थी उसमें इस पे भी चर्चा चल रही थी अभी कि 25 बेसिस पॉइंट बढ़े, 50 बढ़े, 35 बढ़े। आपको क्या लग रहा है अभी भी ये दायरा जो है ऊपर है, ये अंतिम बार है या अभी और बढ़ेगा? मुझे लग रहा है कि गवर्नर ने इस बार एक मैसेज देने का प्रयत्न किया है। अब तक 50 बेसिस पॉइंट बढ़ता था हर बार, इस बार उन्होंने 35 किया है। मैं खुद इस विचार का था कि अगर हम इसे रोक सके तो, पर गवर्नर ने पूरा एक्सप्लेन किया है कि हम इसको रोक नहीं सकते हैं। उसके 2-3 मूल कारण हैं। एक तो इन्फ्लेशन हर जगह बढ़ रही है, हमारे देश में भी बढ़ रही है। आपने अभी आंकड़े देखा है, कभी 7% से ऊपर है, कभी 6.8 है। ये सब जो हमारा बैंड है 2 से 6 और जिसका
सेंटर पॉइंट 4 है, 4 से ऊपर है। तो गवर्नर ने एक कारण तो यही बताया। और दूसरी बात ये भी है कि विदेश से कभी इन्फ्लेशन आ सकती है एक्सचेंज रेट के कारण, तो इसलिए उसको बड़ा ध्यान से देखना है। पर क्योंकि ग्रोथ रेट पे फर्क पड़ सकता है, जैसे अभी अभी पूरा बताया गया कि ऐसे ग्रोथ रेट पे फर्क पड़ सकता है, ग्रोथ रेट को भी ख्याल में रखना है। इसीलिए 50 बेसिस पॉइंट की जगह इस बार 35 बेसिस पॉइंट किया है। तो मुझे लग रहा है कि एक किस्म का एक मैसेज दिया गया है कि हाँ, अगर कंट्रोल में आ गई है इन्फ्लेशन, तो आपने भी आंकड़ा बताया, सितंबर में 7.4 था, अभी अक्टूबर में 6.8 था, मतलब कंट्रोल में आ रही है। जी। अगर आप इसी के करीब दूसरा एक आंकड़ा आता है होलसेल प्राइस इंडेक्स का, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जिसको सरकार और गवर्नर मॉनिटर करते हैं, पर होलसेल प्राइस इंडेक्स था जो हम 2011 तक जिसको मॉनिटर करते थे। अगर आप उसमें आप देखें तो उसमें गिरावट काफी रफ्तार से आई, काफी अच्छी रफ्तार से आई है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी और गवर्नर, उन्होंने इस चीज को देखा है कि हाँ, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रही है, आंकड़े कम हो रहे हैं, तो इसलिए 50% बढ़ाने की जगह इस बार 35 करते। एक बात और है, विदेशों में भी ये बात चल रही है, खास करके अमेरिका में। हमारे यहाँ तो इन्फ्लेशन आप देख रहे हैं 6.8% के करीब चल रही है, और हमारी जो एवरेज देखी जाए तो 4, 5, 6 के आसपास चलती है, अगर 30 साल की एवरेज देखी जाए। जी। विदेशों में खास करके अमेरिका में अगर ऐसी एवरेज देखें तो वो तो 2% है, पर उनकी इन्फ्लेशन चल रही है 10% पे। तो उन्होंने भी ये सोचना शुरू किया, क्योंकि वहां पर भी कंट्रोल आ गया है कि अभी जिस तरीके हम बढ़ा रहे थे 75 बेसिस पॉइंट, उतना तेजी से ना बढ़ाए। तो मुझे लगता है रिजर्व बैंक ने काफी सेंसिटिव और काफी बैलेंस करके 50 बेसिस पॉइंट से 35 बेसिस पॉइंट किया। जी, और जब ये चर्चा हो रही थी इस साल के शुरुआत से ही कि रिजर्व बैंक कुछ फैसले क्यों नहीं कर रहा है, कुछ फैसले फटाफट बढ़ाने के लिए क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात रिजर्व बैंक ने की है। जैसा डॉक्टर सिंह बता रहे थे, एक बैलेंस स्ट्राइक करने की कोशिश की है कि जीडीपी भी, जो विकास दर है, वो भी अफेक्टेड नहीं हो और महंगाई भी कम हो। और शुभ में आपने देखा कि जब हम शो करने आ रहे थे तो हमसे किसी ने पूछा कि ये ईएमआई बढ़ जाएगी और महंगाई घट जाएगी, ये क्या फॉर्मूला है? इसे जरा हम समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी ने पूछा कि भाई ईएमआई बढ़ेगी तो हम ज्यादा पैसे दे रहे होंगे, तो महंगाई कम कैसे हो जाएगी? तो बात यह है कि ईएमआई जरूर बढ़ेगी, और अभी तक बैंक्स मोटा मोटी, वैसे डॉक्टर सिंह ज्यादा अच्छी तरह बता पाएंगे, बैंक्स मोटा मोटी ज्यादातर ईएमआई बढ़ा नहीं रहे थे, टेन्योर को बढ़ा रहे थे, यानी कि लोन की अवधि को बढ़ा रहे थे बजाय रेट को बढ़ाने का। इस बार मोटा मोटी मुझे लगता है 35 बेसिस पॉइंट जो बढ़ा है, उससे अगर हम आंकड़ा हिसाब करें तो करीब महीने में मतलब सबका ईएमआई में करीब 300 रुपए के करीब एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा पर लाख। तो जरूर वो चीज का इफेक्ट आएगा कि सबके ईएमआई बढ़ेंगे। लेकिन आपका जो सवाल है कि ईएमआई बढ़ने के बावजूद हम अगर कैसे कहते हैं कि महंगाई कम होगी, बात यह है कि हम अगर जिस चीज पे खर्च कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट रेट से, ब्याज दर से जुड़े हुए हैं, उन पर तो दाम बढ़ेंगे, उन पर खर्च ज्यादा होंगे। तो उन पर अगर ज्यादा खर्च होंगे तो बाकी बहुत सारी चीजों पे खर्च कम होंगे। आप कह सकते हैं ये काफी एक ऐसा सवाल है कि गरीब के ऊपर ये असर आ जाता है। जी। लेकिन अगर आप गरीबों की या आप साधारण मध्यवित्त की अगर आप देखें तो उसमें उन लोगों का जो ज्यादातर खर्च रहता है वो ईएमआई के साथ साथ जितना इफेक्ट होता है उससे ज्यादा इफेक्ट होता है उनका जब मुद्रास्फीति बढ़ जाता है, उनका खर्च रेट बढ़ता है। तो अगर उनका ईएमआई रेट उतना ज्यादा नहीं होता है, उस पर उतना खर्च नहीं करते हैं जितना मिडिल क्लास टू अपर मिडिल क्लास करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि जितना इनकम बढ़ता है तो लोन के हिसाब से लोन लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसलिए अपर इनकम ग्रुप्स में, मिडिल टू अपर इनकम ग्रुप्स में वहां पे ईएमआई बढ़ेगी। उनका शॉक वो एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी भी है, इसलिए वो संभालेंगे। गरीब जो है, जिनके ऊपर मुद्रास्फीति का इफेक्ट ज्यादा होता है रादर देन की ईएमआई का, उनके लिए ये अच्छी खबर है कि अगर यहाँ पे इस ग्रुप का इनकम एक्सपेंडिचर, अगर एक्सपेंडिचर कम रहे तो निश्चित ही बाजारों में दबाव कम आएगा, चीजों के दामों में की जो गिरावट नहीं, बढ़ने की जो रफ्तार है वो कम हो जाएगी। तो साधारणतः
इकोनॉमी में एक जिसे कहते हैं एक लो इक्विलिब्रियम में एक जिसे कहते हैं टेकिंग ऑफ द हॉट प्लेट टाइप का चीज आ जाएगा, यानी कि और लोगों के पास जो कंज्यूमर गुड्स है उसके ऊपर प्रेशर कम आएंगे। शुभमय ने अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जिसे हम नोट कर सकते हैं कि दरअसल हम समझते हैं कि जब मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन की बात करते हैं रिटेल सीपीआई की, तो हम ये समझते हैं कि भाई मुद्रास्फीति कम हो गई, दाम क्यों नहीं गिरा। दरअसल मुद्रास्फीति कम होने का मतलब दाम गिरना नहीं है। इसका मतलब ये है कि जिस रफ्तार से दाम बढ़ रहा था उस रफ्तार में कमी आई है उतने प्रतिशत की। और ईएमआई की हम बात कर रहे थे कि ईएमआई में दरअसल जब जब रेपो रेट बढ़ता है, रेपो रेट भी हमने पिछली बार समझने की कोशिश की थी कि ये वो रेट होता है जिसपे बैंक्स जो हैं आरबीआई से लोन लेते हैं। एक तो आरबीआई बैंक्स को लोन देता है, दूसरे पब्लिक भी लोन देती है। जब हम अपने पैसे जमा करने जाते हैं तो उसे हम लोन ही समझें कि हमने बैंक को दिया, और ये पूरा मनोवैज्ञानिक खेल है। इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा है तो हम जो पैसे बैंक में जमा करेंगे उस पे हमें भी ज्यादा ब्याज दर मिलेगा, तो लोग खर्च कम करेंगे, अपने पैसों पे ज्यादा ब्याज अर्न करना चाहेंगे, और इस तरीके से मार्केट से पैसे कम होंगे, खरीदारी कम होगी, डिमांड कम होगा, और डिमांड कम होने से चीजों की दाम जरूर कम होंगे। ऐसा आरबीआई को भी लगता है और ये होता भी है। लेकिन ईएमआई की बात हम कर रहे थे और डॉक्टर सिंह से हम पूछेंगे, ईएमआई बैंक्स बढ़ा देते हैं लेकिन रेट आपकी ईएमआई जो होती है, जो फिक्स अमाउंट होता है वो नहीं बढ़ता है, जो शुभमय अभी बता रहे थे। होता क्या है कि आपका टेन्योर बढ़ जाता है और आपको पता नहीं चलता। लेकिन ये काम 2-3 बार हो चुके हैं, इसलिए शायद इस बार ईएमआई की जो रकम हम देते हैं वो बढ़े। इससे हम कैसे मैनेज करें डॉक्टर सिंह? इससे मैं भी जूझ चुका हूं कि जो लोन हमने 20 साल के लिए लिया था वो हमें पता ही नहीं चला कि कब 27 साल का हो गया। बढ़े रेपो रेट पे इसको मैनेज करने के लिए जो फ्लेक्सिबल हम लेते हैं, तो इसको कैसे बेस्ट पॉसिबल वे है मैनेज करने का? इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब आप बैंक से ऋण लेते हैं तो खत्म ही नहीं होता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ता ही जाता है। मैंने खुद घर के लिए लिया हुआ है और मैं खुद देखता हूँ कि वो अभी भी इतना पड़ा हुआ है। तो बात तो सही है, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, अगर तो ईएमआई बढ़ा दिया जाए तो लोगों को थोड़ी कठिनाई हो सकती है। तो इसलिए आमतौर पे बैंक पूछ लेते हैं और उसका टेन्योर बढ़ा देते हैं। एक बात तो ये भी मैं कहनी चाहूँगा कि जैसे रिजर्व बैंक ने इस बार इतने रेट बढ़ाए हैं, जैसे आपने खुद देखा कि 200 बेसिस पॉइंट पे रेट बढ़ाया, अभी 35 बढ़ गया, 235 बेसिस पॉइंट बढ़ गए। पर जो ईएमआई है उसमें वो एकदम उतना ही रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो जो ट्रांसमिशन होती है इंटरेस्ट रेट की रिजर्व बैंक के बढ़ाने से, और जो आपके लोन पे आता है वो थोड़ा लैग के साथ आता है और थोड़ा कम भी आता है। तो वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट जो होता है, जो पिछले 5 वर्षों से हम उसको रेपो के साथ भी जोड़ सकते हैं और मार्केट के रेट के साथ भी जोड़ सकते हैं। तो एक बात तो ये भय कि अभी क्योंकि रिजर्व बैंक ने 235 पॉइंट इसको बढ़ाया, बेसिस पॉइंट बढ़ाया है, हमारी ईएमआई उतनी ही बढ़ जाएगी। खैर उतनी नहीं बढ़ेगी। पहला तो वो भय मन से निकाल देना चाहिए। दूसरा, कई बार टेन्योर बढ़ जाती है, तो कई बार अभी भी ईएमआई का वो अमाउंट नहीं बढ़ेगा। अगर कोई चाहे तो उसको टेन्योर बढ़ा सकता है। ये भी बात जरूरी है।